Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 24 of Business Mathematics MTH367. Today we will continue with the chapter number 16, which was optimization methodology. So last lecture summary. So in last lecture we covered section 16.1. Primarily it was about derivatives, additional interpretation, यानी derivatives की जो additional interpretation थी उसके बारे में हमने study किया. So the topics we studied were increasing functions, decreasing functions, concavity and inflection points. तो हमने चार टॉपिक पढ़े. इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा, कनकेविटी के बारे में पढ़ा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा. तो प्राइमरली हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ किया, सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ किया और उसको देखते हुए हम ग्राफ को कब कह सकते हैं कि ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हम कब फाइंड कर सकते हैं, कब फंक्शन इंक्रीजिंग है ये फर्स्ट डेरिवेटिव के ज़रिए हमने फाइंड किया, कब फंक्शन डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल के ऊपर, जिस इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो वी स्टडीड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन द लास्ट लेक्चर. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स. सो वी विल गो ओवर सेक्शन 16.2 today. So this is about the identification of maxima and minima. So we will define at the start what is relative extrema, that is relative maxima and relative minima. उसके बाद हम absolute maxima और absolute minima पढ़ेंगे. उसके बाद हम first derivative test स्टडी करेंगे और आखिर में second derivative test पढ़ेंगे. So what is relative extrema? तो रिलेटिव एक्सट्रीमा से मुराद ये है कि रिलेटिव जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वो क्या है. तो एक रिलेटिव मैक्सिमा होता है और एक रिलेटिव मिनिमा होता है. सो वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा, और रिलेटिव मैक्सिमम भी कहते हैं इसको और रिलेटिव मिनिमम भी कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा को. सो रिलेटिव मैक्सिमम. सो इफ एफ इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल बी सी विच कंटेन्स द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ इज सेड टू हैव अ रिलेटिव or local maximum at x is equal to a if f of a is greater than equal to f of x for all x within the interval bc close to x is equal to a. तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक इंटरवल bc के ऊपर डिफाइन है और उसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट है जो कि a है. तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन का रिलेटिव या लोकल मैक्सिमम है उस पॉइंट के ऊपर अगर एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ एक्स से बड़ा हो उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो कि उस इंटरवल में उस ए के इर्द गिर्द पाई जाती हैं. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम, यानी उस इंटरवल के अंदर ए के इर्द गिर्द यानी ए से कम और इससे ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर अगर हम चेक करें तो बेसिकली वो तमाम अगर वैल्यूज़ उससे कम हो तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये रिलेटिव मैक्सिमम है. सो इफ एफ इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल बी सी विच कंटेन्स एक्स इज इक्वल टू ए, एफ इज सेड टू हैव अ रिलेटिव और लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए if f of a is less than equal to f of x for all x within the interval bc close to x is equal to a. तो बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एक इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है तो उस x इज इक्वल टू a जो कि उस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट है उसके ऊपर आपका फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम होगा अगर f ऑफ a जो है वो f ऑफ x से कम हो. x क्या है यहाँ पे, x वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो कि a के आसपास की वैल्यूज़ हैं. सो सॉर्ट ऑफ अगर ग्राफ पे देखा जाए तो यानी ये वो पॉइंट है ए और इसके आसपास जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ए जो है वो सबसे एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ एक्स से कम है. लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए या राइट हैंड साइड पे, यानी इसके आसपास की वैल्यूज़ में. सो दिस इज़ द इंटरवल बी सी. इसी तरह अगर मैक्सिमम के लिए देखा जाए तो अगर इस तरह का आपका एक फंक्शन है तो ये सबसे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी है तो ये आपका होगा रिलेटिव मैक्सिमम. ये आपका ए है तो ये आपका इंटरवल है बी सी. So primarily
That's how you identify the local or relative minimum and local or relative maximum. So now we draw a picture to depict all these, both of these concepts in one picture. ये हमारा y axis है and this is our x axis. So now we have given the graph of f of x. तो ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि f of x है. So we can see that this point which is a and f of a is a relative मैक्सिमा. तो ये क्या है आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो तमाम पॉइंट्स हैं इसके आसपास वहाँ पे f ऑफ x की जो वैल्यू है वो इससे कम है और यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है. सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट के ऊपर आएंगे जो कि भी f ऑफ b है, so this is your relative minimum. So this is CF of C. Here we also have relative maxima. और इस पॉइंट पे अभी हमारे पास है relative minimum. So this is df of d. It has relative minimum. So this is the x axis पे ये b होगा आपके पास, ये a है, ये c है और similarly this is your d at x axis. So this graph basically depicts के आपके पास जो relative maximum है वो क्या होता है, यानी इसकी एज़ियर की तमाम वैल्यू जो हैं c f of c पॉइंट से कम है, तो इसीलिए c f of c is relative maximum है. यहाँ पे जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये भी f of b से बड़ी हैं ग्राफ की, तो हम कह सकते हैं कि b f of b जो है ये relative minimum है. So both definitions focus upon the value of f of x within an interval. तो यानी दोनों definitions जो हैं किसी एक इंटरवल के अंदर f of x की जो वैल्यूज़ हैं उस पर कंसनट्रेट करती हैं. A relative maximum refers to a point where the value of f of x is greater than the values for any points which are nearby. तो relative maximum वो होता है जहाँ पे f of x की वैल्यू उसके आसपास की जो वैल्यूज़ हैं उससे बड़ी होती हैं. जैसे कि इस फिगर से जाहिर है कि c f of c और a f of a पे आपका relative maximum है. So a relative minimum refers to a point where the values of f of x is lower than the values for any points which are nearby. तो relative minimum वो होता है जहाँ पे f of x की वैल्यू जो है उसकी आसपास की तमाम वैल्यू से छोटी होती है, जैसे कि b है और d है, या f of b और f of d है जहाँ पे इनकी वैल्यू बाकी की आसपास की वैल्यू से छोटी है. So if we use these definitions and examine the above figure, f has a relative maxima at x is equal to a and x is equal to c. Similarly, f has a relative minimum at x is equal to b and x is equal to d. तो x is equal to a और x is equal to c पे जैसे कि हमने देखा हमारे पास relative maxima था
और x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू d पे हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है, और कलेक्टिवली रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा आर कॉल्ड रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो यानी इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा। So the next is absolute maximum. A function f is said to reach an absolute maximum at x is equal to a if f of a is greater than f of x for any other x in the domain of f. तो फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम को रीच करता है कि x इज इक्वल टू a पे अगर f ऑफ a जो है वो f ऑफ x से ग्रेटर देन इक्वल हो उसकी x की f की जो डोमेन है उसमें x की तमाम वैल्यूज़ के लिए अगर ये ट्रू हो तो आप कहते हैं कि आपका x इज इक्वल टू a के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है f का। So if you look at the figure, then this point is also an absolute maximum, क्योंकि अगर हम इसकी डोमेन ले लें यहाँ से f की डोमेन ले लें हम द पॉइंट e से पॉइंट f तक, तो यहाँ पे बेसिकली c वो पॉइंट है जहाँ पे जो f ऑफ x की वैल्यू है बाकी तमाम वैल्यू से ज़्यादा है। सो दिस इज़ रिलेटिव मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। Absolute minimum. So a function f is said to reach an absolute minimum at x is equal to a if f of a is less than f of x for any other x in the domain of f. तो फंक्शन f जो है उसको हम कहते हैं कि इसका एब्सोल्यूट मिनिमम है x इज इक्वल टू a पे अगर f ऑफ a की जो वैल्यू है f ऑफ x की तमाम वैल्यू से छोटी हो, जहाँ पे x हमारे पास डोमेन ऑफ f के एलिमेंट्स हैं। तो अगर x इज इक्वल टू a पे डोमेन ऑफ f में f ऑफ a की वैल्यू बाकी तमाम वैल्यू से छोटी है तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। इफ यू लुक बैक एट द फिगर देन दिस पॉइंट b f ऑफ b जो है इस फिगर में इसकी वैल्यू जो है फंक्शन f की b के ऊपर जो वैल्यू है वो तमाम वैल्यू से छोटी है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस इज रिलेटिव मिनिमम एट आल्सो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? नेसेसरी कंडीशंस फॉर रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। तो बेसिकली हम अब जो नेसेसरी कंडीशन है रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की उसको डिस्कस करेंगे। सो गिवन द फंक्शन f, necessary conditions for the existence of a relative maximum or minimum at x is equal to a where a is contained in the domain of f is the following. तो जो नेसेसरी कंडीशंस हैं किसी पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा होने की वो ये हैं। एक तो ये है कि या तो आपके पास f प्राइम ऑफ ए ज़ीरो हो और f प्राइम ऑफ ए आपके पास अनडिफाइंड हो, यानी a के ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके फंक्शन f का अगर वो ज़ीरो हो तो वहाँ पे भी आपका रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करने का इम्कान है, और अगर उसके अलावा अगर उस पॉइंट के ऊपर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड है तो तब भी इम्कान है कि वहाँ पे आपका जो रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा है वो एग्जिस्ट करेगा। Points which satisfy either of the conditions in this definition are candidates for relative maxima or minima. Such points are often referred to as critical points. So any critical point where f prime of x equal to 0 will be a relative maximum or a relative minimum or an inflection point. तो वो जो दो गिवन कंडीशन है उनमें से अगर कोई पॉइंट एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो हम कहेंगे कि ये रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कैंडिडेट है। यानी
ऐसा ए जिसके ऊपर या तो एफ प्राइम ऑफ ए ज़ीरो हो या फिर एफ प्राइम ऑफ ए अनडिफाइंड हो, तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबली हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा या रिलेटिव मिनिमा होगा, और ऐसे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, या तो ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा या ये रिलेटिव मिनिमम होगा, और या फिर ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। सो फर्दर कमिंग आर सम टेस्ट्स विच टेल्स दैट कि ये जो हमारे पास टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, क्या वो रिलेटिव मैक्सिमम है, क्या वो रिलेटिव मिनिमम है, या फिर वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। सो नाउ वी डू एन एग्जांपल वेयर वी विल बी determining the critical points of the given function. So determine the locations of any critical points on the graph of f of x is equal to x cubed divided by 3 minus x squared divided by 2 minus 6x plus 100. So we will be determining the locations of critical points. So taking derivative, so now we move to the solution. So taking derivative, f prime of x is 3x squared divided by 3 minus 2x divided by 2 minus x into 1 plus 0. So this is x square minus x minus 6. So basically जहाँ पे आपके critical points आ रहे हैं वो वैल्यूज हैं जहाँ पे f prime of x 0 हो गया। So we put f prime of x equal to 0. So this gives you x square minus x minus 6 is equal to 0. So now to factorize, we can write this as x squared minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. So this gives us x is equal to, x is taken common, तो ये हमारे पास x minus 3 आ जाएगा, and here we take 2 common, we get x minus 3 which is equal to 0. So if you take x minus 3 common, तो ये आपके पास आ जाएगा x plus 2 which is equal to 0. So it means that x minus 3 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. So this gives you x is equal to 3 or x is equal to minus 2. तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास इन दो वैल्यूज़ के ऊपर आ रहे हैं। सो बेसिकली आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए -2 को पुट करेंगे तो आपके पास आएगा f of -2 is 107 by 3, and if you find f of 3 you will get 86 by 2. So the resulting critical points are -2 by 107 by 3 and 3 by 86 by 2. So the next is the first derivative test. After the locations of critical points are identified, the first derivative test requires an examination of slope conditions to the left and right of the critical point. तो यानी अगर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स की कंडीशन फाइंड हो जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपसे रिक्वायर करता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ़्ट और राइट के ऊपर आपने वैल्यू पुट करनी है, और
उस वैल्यू के पुट करने से आपके पास एक आप ये कंक्लूड कर सकेंगे कि ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है ये किस टाइप का क्रिटिकल पॉइंट है. ईदर इट विल बी अ रिलेटिव मैक्सिमा और इट विल बी अ रिलेटिव मिनिमा और ईदर इट इज़ अ just an inflection point. So when we make a note that we will denote the critical values by x star. X star से हम critical values को denote करेंगे. So the first derivative test consists of the following steps and it has the following consequences. So the first step is that locate all critical values x star. First derivative test में सबसे पहले आपने तमाम critical values को find करना है जैसे कि हमने last example में find किया. After that, for any critical value x star, determine the value of f prime x to the left, which is xl, and right, which is xr of x star. तो उसके बाद जब तमाम क्रिटिकल वैल्यूज़ आप फाइंड कर लेंगे तो आप x के लेफ़्ट साइड पे एक एवेल्यूएट करेंगे f प्राइम को और x के राइट साइड पे आप एवेल्यूएट करेंगे f प्राइम को. सो व्हाट डू यू मीन बाय लेफ़्ट एंड राइट? अगर आपके पास ये रियल लाइन है और यहाँ पे आपका क्रिटिकल पॉइंट x स्टार है तो उसके लेफ़्ट पे आपने एक पॉइंट पे एवेल्यूएट करना है और एक उसके राइट हैंड साइड पे किसी एक पॉइंट पे एवेल्यूएट करना है. दिस विल बी xl और ये जो पॉइंट है ये आपका x स्टार है. सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. सो इफ f प्राइम ऑफ xl इज ग्रेटर देन 0 एंड f prime of xr is less than 0, then there is a relative maximum. For f at x star f of x star, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप इवेल्यूएट करें तो वो पॉजिटिव हो और यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे इवेल्यूएट करें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो आपके पास जो पॉइंट होगा वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा. सो पार्ट बी इज, सो देयर इज पॉसिबिलिटी 2 व्हिच इज इफ f prime of xl is less than 0 and f prime of xr is greater than 0, there is a relative minimum. For f at x star व f of x star, यानी अगर क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है और इसकी राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उस पे हमने इवेल्यूएट किया है और वो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपके पास जो है रिलेटिव मिनिमम आएगा. सो थर्ड पॉसिबिलिटी इज सी. सो इफ f प्राइम ऑफ x हैज़ द सेम साइन ऑफ बोथ xl and xr, an inflection point exists at x star f of x star. तो यानी अगर आपके पास साइन सेम हो xr पे भी और xl पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव का तो आप कहेंगे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ x की x स्टार वैल्यू के ऊपर हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है. So if f prime of so basically this is first derivative which is telling you about the nature of the critical point. यानी आपने जो critical point find किया है क्या ये relative maximum है, क्या ये relative minimum है और क्या ये एक inflection point है. Example. So determine the locations of any critical points on the graph of f of x is equal to 2x square minus 12x minus 10 and determine their nature. तो हमें एक फंक्शन गिवन है जिसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड करनी है कि वो कहाँ पे हैं और उसके बाद हमने उनकी टाइप फाइंड करनी है कि ये किस टाइप का क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ रहा है. सॉल्यूशन. So first we find the first derivative. So the first derivative is
f prime of x, which will be 2 into 2x minus 12 into 1 minus 0. तो ये आपके पास आएगा 4x minus 12. So we put f prime of x equal to 0. So this gives you 4x minus 12 is equal to 0. So this implies that 4x is equal to 12 and equivalently x is equal to 3. So now this is the critical point. So what is the nature of this critical point? क्या ये relative maximum है, क्या ये relative minimum है, या एक inflection point है? So we let xl to be 2.9, जो कि x is equal to 3 के left पे है, and xr to be 3.1. So here you have your 3, और ये आपके पास है xl, और ये आपका है xr, जो कि आपके पास 3.1 है, और ये रफली 2.9 है. So now we evaluate the first derivative at xl. So what is f prime of xl? So f prime of xl is equal to f prime of 2.9. So this is 4 into 2.9 minus 12, and if you evaluate this, what you will get is minus 0.4. और f prime of xr क्या होगा? वो होगा f prime of 3.1. तो ये होगा आपके पास 4 into 3.1 minus 12. तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये होगी 0.4. So what you have is that f prime of xl is less than 0 and f prime of xr is greater than 0. So if you look at your first derivative test, so the first derivative is negative, which is minus 0.4 to the left of x is equal to 3, and positive, which is 0.4 to the right of x is equal to 3. So what we conclude is that at the point, so basically जब हम f of 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास आता है -28. So at the point 3 व -28, f has a relative minimum. क्योंकि हमारी यही कंडीशन थी कि जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 के लेफ़्ट के ऊपर नेगेटिव है और x इज इक्वल टू 3 के राइट के ऊपर पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो x इज इक्वल टू 3 पे जो पॉइंट बनता है बेसिकली वो f ऑफ 3 है, जो कि -28 है. तो एट द पॉइंट 3 और -28 f का जो है वो रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है. तो इस फंक्शन का एक ही क्रिटिकल पॉइंट था और हमने फाइंड किया कि वो रिलेटिव मिनिमम है. सो नाउ बेसिकली वी गो बैक टू द लास्ट एग्जांपल, जो कि जहाँ हमने क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड की थी फंक्शन की, और अब हमने उनकी नेचर फाइंड करनी है. सो द ग्राफ ऑफ f of x is equal to x cube divided by 3 minus x square divided by 2 minus 6x plus 100
has critical points at 386/2 जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया, और एंड एट -2/107/3. So determine the nature of these critical points. So determine the nature of these critical points. So we examine the first derivative. So in solution, we start with the examination of first derivative. So f prime of x is x square minus x minus 6, which we found in the last example. So now first we test, first we check the critical point x is equal to 3. We take xl to be 2 जो कि लेफ्ट के ऊपर है इसके, और and xr to be 4 which is to the right of 3. So f prime of xl is equal to f prime of 2 is equal to 2 square minus 2 minus 6. So this gives you 4 minus 2 minus 6, which is equal to minus 4 less than 0. And now we find f prime of x r, जो कि हमारे पास है f prime of 4. तो ये होगा आपके पास 4 square minus 4 minus 6 जो कि 16 minus 10 है, और ये होगा 6 जो कि greater than 0 है. So it means that f has a relative minimum, thus f has a relative minimum at 3, or what was your f of 3 was 86/2, as f prime of x is negative to the left of x is equal to 3 and is positive to the right of x is equal to 3. So now we test the critical point. X is equal to -2. So we select XL, which is to the left of -2 is to be -3, and XR to be -1. यानी हमारे पास ये पॉइंट है, दिस इज़ आवर 0, दिस इज़ आवर -2, तो यहाँ पे लेफ्ट पे हम ले रहे हैं -3 और राइट पे हम ले रहे हैं -1. दिस इज़ योर क्रिटिकल पॉइंट x स्टार, ये आपका XR है और ये आपके पास जो है ये XL होगा.
So now we find f prime of xl, which is f prime of minus 3. Then you have minus 3 squared minus into minus 3 minus 6. ये होगा आपके पास 9 plus 9 minus 6, which is equal to 12, which is positive. And f prime of xr, f prime of minus 1, तो ये होगा minus 1 square minus into minus 1 minus 6. This will be equal to 1 plus 1 minus 6, जो कि होगा minus 4 and less than 0. So f prime of xl, f prime of x is positive to the left of x is equal to minus 2 and negative to the right of x is equal to minus 2. So at the point minus 2 or 107 by 3, f has relative maximum. तो हमारे पास ये फंक्शन था जिसके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स लास्ट एग्जांपल में फाइंड किए. तो हमने इस एग्जांपल में फाइंड की कि इनकी नेचर क्या है. तो उसके लिए हमने बारी बारी दोनों पॉइंट्स को लिया और उनके लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे हमने एवेल्यूएट किया फर्स्ट डेरिवेटिव को, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए हमने बताया कि x इज़ इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम है और x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर जो है वो फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम है. सो दैट्स हाउ बेसिकली यू फाइंड द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स. सो नाउ वी स्टडी द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. So second derivative test is basically useful to find the concavity at the any given critical point. अब आपके पास concavity भी एक important basically property है किसी भी function के ग्राफ की. तो concavity find करने के लिए हम second derivative test use करते हैं, क्योंकि critical point वो होता है जहाँ से basically concavity change होती है. If you have seen in the last lecture the animation where you can basically see that it primarily is also related to concavity. तो इसलिए अब हम बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड करेंगे कि अगर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो concavity उन पे किस तरह से फाइंड की जाती है. यानी गिवन क्रिटिकल पॉइंट जो है ये concave अप है, concave डाउन है, या फिर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते इसके बारे में. So for critical points where f prime of x is equal to 0, the most expedient test is the second derivative test. This is helpful to find the concavity of the function f at the critical points of f. It is also helpful in finding the nature of critical points. तो ये नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स भी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं. द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. So the first step is to find all critical values x star such that f prime of x star is equal to 0. तो आपने वो तमाम वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि उस फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं f prime of x को 0 पुट करके.
So for any critical value x star determine the value of f double prime of x star. तो किसी भी critical value x star के लिए आपने f double prime of x star फाइंड करना है, यानी आप फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेके और उसको x star के ऊपर इवेल्युएट करेंगे। तो जाहिर है इससे आपके पास एक रियल नंबर आएगा और उसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, या फिर वो नंबर नेगेटिव होगा, या फिर वो नंबर ज़ीरो होगा। सो नंबर ए इज़ दैट if f double prime of x star is positive, the function is concave up at x star and there is a relative minimum of for f at x star f of x star, यानी सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो तो फंक्शन जो होगा वो कनकेव अप होगा, जिसका मतलब है कि आपके पास x star f of x star पे relative minimum होगा। So if f double prime of x star is less than 0, the function is concave down at x star and there is a relative maximum for f at x star f of x star। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव x star के ऊपर लेस देन 0 हो तो फंक्शन जो होगा वो concave डाउन होगा x star पे, और f का जो है वो x star f of x star के ऊपर आपके पास relative maximum होगा। So if f double prime of x star is equal to 0, no conclusion can be drawn about the concavity at x star nor the nature of the critical point। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव x star पे 0 हो तो हम concavity या nature of critical point पे हम कोई conclusion draw नहीं कर सकते। So we have to use another test such as the first derivative test। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जस्ट बेसिकली आपने सेकंड डेरिवेटिव लेके आपने उसको इवेल्युएट करना है क्रिटिकल पॉइंट पे। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन कनकेव अप है और आपका उस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम आएगा, और इसी तरह अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपका फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होगा और इस सूरत में आपके पास जो है रिलेटिव मैक्सिमम आएगा एक्स स्टार और एफ एक्स स्टार के। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव 0 है तो आप कोई कंक्लूजन भी कनकेविटी या नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट के बारे में ड्रॉ नहीं कर सकते। So now we move to solve an example. So examine the following function for any critical points and determine their nature. So now basically we want to use the second derivative test. So we have f prime of x which is equal to minus 3 by 2x square plus 6x minus 20. So this is our f of x. This means that f prime of x is equal to minus 3 by 2 into 2x plus 6 into 1 minus 0. So this will give us minus 3x plus 6. So we put f prime of x equal to 0 to find the critical points. तो critical point find करने के लिए हम f prime of x को 0 पुट करेंगे, जिसका मतलब है कि minus 3x plus 6 को हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। So we have one critical point here. So ठीक है, so this is our critical point. So the value of f of x at x is equal to 2 is f of 2 which is minus 14. तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? So the only critical point is 2 over minus 14. So now we need to use second derivative test. So taking f double prime of x, we get f prime of x was minus 3x plus 6, तो ये होगा हमारे पास minus 3 into 1 plus 0 means that minus 3. So now f double prime of 2
ये कांस्टेंट फंक्शन है तो किसी भी वैल्यू के लिए ये होगा आपके पास -3 which is less than 0. So it means that the graph of f is concave down. So the graph of f is concave down at this point. And the critical point is relative maximum. तो आपने देखा कि यहाँ पे सेकंड जो डेरिवेटिव टेस्ट है उसकी मदद से आपने दो चीज़ें फाइंड की. एक तो आपने ये फाइंड की कि ये किस नेचर क्या है इस क्रिटिकल पॉइंट की जो कि आपके पास x = 2 पे है. दूसरा आपने ये फाइंड किया कि ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है. वंस यू नो इट इज़ कनकेव डाउन सो इट इज़ रिलेटिव मैक्सिमम. So let's solve another example. Given f of x which is equal to x to the power 4 divided by 4 minus 9 by 2 x square, find the critical points and their nature. So we have solution starting with taking first derivative. F prime of x is 4 by 4x cube minus 9 by 2 into 2x. So this gives you x2 x cube minus 9x. So this is f prime of x. So you put f prime of x is equal to 0. Cube minus 9x is 0. So this gives us x into x square minus 9 is equal to 0. So if you factorize, then this is x into x plus 3 into x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 0, 3 or minus 3 are the points where f prime of x is 0. So if you evaluate the function on these three values, then you can work out that the critical points are 0, 0, minus 3 or minus 81 by 4 or 3 or minus 81 by 4. So now we use second derivative test to determine their nature and the type of concavity. So second derivative test. So for second derivative test, f double prime of x first we shall find. So f double prime of x is equal to 3x square minus 9 into 1, which gives us 3x square minus 9. So first we take the first critical point, which is at x is equal to, which is 0, 0. So we find f double prime of 0. So f double prime of 0 is 3 into 0 minus 9, which is less than 0. Since f double prime is at 0 is negative, f is concave down at x is equal to 0. And relative maximum occur at zero, 0. So now we check the second point, which is minus 3 or minus 81 divided by 4.
So f double prime of minus 3 is equal to 3 into minus 3 square minus 9, and this gives us 18, which is greater than 0. So it means that f is concave up and relative minimum occur at minus 3 over minus 81 by 4. So we have seen that f double prime of minus 3 is positive. क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव माइनस 3 पर पॉजिटिव है, तो जो हमारे पास माइनस 3 व माइनस 81 बाई 4 पॉइंट है, ये आपके पास रिलेटिव मिनिमम होगा और फंक्शन जो है इस पॉइंट पे कनकेव अप है. और नंबर 3 we checked 3 व minus 81 by 4. So f double prime of 3 just gives you the same 18. So we can say that f is concave up and has relative minimum at 3 minus 81 by 4. So that's how basically you find the nature of the critical points and the concavity of the function at the critical points by using the second derivative test. So now basically we a little bit talk about when the second derivative test fails. So if double prime of x is equal to 0, the second derivative does not allow for any conclusion about the behavior of f at x star. So we consider the following example. जैसे कि हमने शुरू में मेंशन किया कि सेकंड डेरिवेटिव अगर क्रिटिकल वैल्यू पे 0 है तो हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते नेचर के बारे में और कन्केविटी के बारे में. सो अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से ये इस तरह कौन से फंक्शन हैं जो इस अकर होते हैं और हम उनमें से एक ही एग्जांपल देखेंगे. So examine the following functions for any critical points and determine their nature. So f of x is equal to minus x to the power 5. So if you look at the solution then, so f prime of f of x क्या था आपके पास minus x to the power 5. So your f prime of x will be minus 5 x to the power 4, and when you put f prime of x is equal to 0, it basically means that minus 5 x to the power 4 is 0. It means that x is equal to 0. तो x is equal to 0 जो है आपके पास सोल्यूशन है. तो आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है. So the critical point is at 0 0 क्योंकि आपके पास जो f of 0 है वो 0 है. So now we take second derivative for the second derivative test. So f double prime of x is minus 20 x cube, and what we have seen that at f double prime of 0 we have 0, so it means that no conclusion. तो यहाँ हमने देखा कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो गया है क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 0 0 हमारा क्रिटिकल x y जो कि हमारा पॉइंट है वो जो क्रिटिकल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्ड है वो 0 0 है. तो हमने f डबल प्राइम ऑफ 0 एवेल्यूएट किए तो हमारे पास 0 आ गया. तो जैसा कि हमने कहा कि हम फाइंड कर सकते हैं इसकी नेचर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो अगर हम यहाँ पे so we apply first derivative test. तो हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे. तो अगर हम देखें तो XL हम -1 ले सकते हैं और XR को 1 ले सकते हैं.
this is 0, so this is -1, this is 1, so this is XL, और ये आपके पास जो है ये XR है. So now basically you find the f prime of XL. So f prime of XL होगा आपके पास -5 into -1 to the power 4, जो कि आपके पास है -5 into 1 is equal to -5, और f prime of XR है आपके पास -5, जो कि primarily it means कि you are finding f prime of 1. This is -5, 1 to the power 4, which is equal to -5 into 1 is equal to -4. So the sign doesn't change. Sign doesn't change as f prime of XL and f prime of XR are both negative, so 0, 0 is an inflection point. तो 0, 0 हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जो कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड कर लिया है. So we can find the nature of the different critical points by using different sorts of tests. तो यहाँ हमने देखा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो गया, हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया है, और जो हमारा x = 0 है उसके लेफ्ट पे हमने वैल्यू ली -1 और उसके राइट पे ली 1, और हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को एवेल्यूएट किया तो दोनों पे उसका साइन नेगेटिव आया, और जब दोनों पे उसका साइन सेम आया तो हम कहते हैं कि फंक्शन का उस पॉइंट के ऊपर जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. So the given function has inflection point as a critical point. So this was your lecture number 24. So we briefly reviewed this lecture. तो आज हमने सेक्शन 16.2 को कवर किया. तो हमने बेसिकली स्टार्ट किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा से. उसके अंदर हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा यानी रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा पढ़ा. उसके बाद हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से फाइंड करने हैं. उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टडी किया. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने फाइंड किया कि नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह से फाइंड की जाती है, और उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि नेचर ऑफ क्रिटिकल टेस्ट और कनकेविटी दोनों को किस तरह से फाइंड किया जाता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम कर्व स्केचिंग करेंगे. 16.3 और 16.4 दो सेक्शन हैं, उनको हम कवर करेंगे और कर्व स्केचिंग से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कंसिडरेशंस को भी स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम प्रोसीजर बताएंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है. तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करके मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना सीखा होगा. अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.